Okay, good morning my dear student of class 11 and 9. Today I am going to discuss very important topic, conclusion drawn from velocity time graph. Before this video I have given you conclusion drawn from distance time graph. Now I am going to explain conclusion drawn from velocity time graph. It will help you in many respects in your further study. So here is different types of velocity time graph. At that time you have to remember, always remember that independent physical quantity will be taken on x-axis. As you know, time does not depend on anything, so time is independent, and therefore time is taken on x-axis and velocity is taken on y-axis. I have drawn here 5 graph number 1, 2, 3, 4 and 5. So what can we conclude when we look over the first graph? When we look over the second graph, what can we conclude? When we look over third, fourth and fifth graph, how we can conclude? So the first conclusion is here. I have written here first, number 1. Nature of motion can be estimated by looking over the graph. ग्राफ को देख करके हम लोग नेचर ऑफ मोशन को बता सकते हैं. जैसे पहला ग्राफ को देख करके हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो हम लोग निकाल क्या सकते हैं, ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो ये 3 चीजें हम लोग बता सकते हैं. पहला, नेचर ऑफ मोशन क्या होगा भाई, यूनिफॉर्म. आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बॉडी एट रेस्ट होता है, लेकिन यहाँ देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसलिए मोशन यूनिफॉर्म होगा और इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी दैट विल बी 0 एंड देयरफॉर नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हम लोग कर सकते हैं. मोशन इज यूनिफॉर्म बट इट इज नॉन एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन. नॉन एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन. स्पीड निकालना हो तो स्पीड कांस्टेंट. दूसरा हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं इसी में, फर्स्ट कंक्लूजन नेचर ऑफ मोशन. दूसरे ग्राफ को अगर देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ है, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन बट इट इज मेकिंग सम एंगल विद द टाइम एक्सिस. हियर इट इज मेकिंग थीटा, हियर इट इज मेकिंग थीटा एंगल, सो इट इज मेकिंग सम एंगल विद द टाइम एक्सिस. तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो मोशन जो होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा. Here uniformly non-accelerated motion, but here it will be uniformly accelerated motion. You can see graph number 2. Graph number 3, you can see body has started some velocity, initial velocity. It has some initial velocity, but motion is uniformly accelerated motion. These are the conclusion you can draw from the velocity time graph. Now come to the next second conclusion. Now come to second conclusion. This is conclusion number 2, that we can calculate distance or displacement of the body using this graph. How can we calculate the distance? The formula will be distance is equal to area under the graph. कोई भी ग्राफ में उसके नीचे टाइम एक्सिस की तरफ ये लाइन से यहाँ ए बी से ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग निकाल लेंगे. तो इस स्ट्रेट टाइम पैरेलल टू टाइम एक्सिस जो जा रहा है, ये कितना डिस्टेंस कवर करता है ये निकल जाएगा. तो ये एरिया है, रेक्टेंगल है, तो इसमें यूज करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये जो सेकेंड ग्राफ है, इसमें ये ट्रायंगल बन रहा है, इट इज मेकिंग ट्रायंगल. तो सेकेंड ग्राफ में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी से हम लोग निकालेंगे. एरिया निकालना है, जो शेप बनेगा उसका एरिया निकालना है. ग्राफ 3 में देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से हम लोग निकालेंगे. एरिया ट्रेपीजियम हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से निकालेंगे और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे.
और फिर निकालेंगे, है ना। इसके पहले हमने आपको एक वीडियो लेक्चर दे चुके हैं, प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ, dt ग्राफ। तो उसमें आप उस वीडियो को देखिए, उससे आप देंगे। इसमें हम उसका लिंक डाल देंगे। 4 और 5 नंबर जो ग्राफ है उसमें भी इसके अंदर एरिया जो शेड करेंगे ये निकालेंगे। जो भी एरिया बन रहा है वैसे भी इसके इस पोर्शन को हम लोग निकालेंगे। तो इससे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द यू कैन सी हियर। नाउ कम टू नेक्स्ट कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर 3। Acceleration of the body, moving body can be calculated using graph. So acceleration is equal to slope theta with the time axis of the graph, or slope theta of the graph with the time axis. So you can see in the graph number 1, this is parallel to time axis, so it does not make any angle with time axis. So theta is 0, so we can directly write here the acceleration will be 0 as theta is 0. In graph number 2, you can see it is making some angle here, theta angle is there. So when you are going to calculate theta, you will use perpendicular by base formula of theta is equal to perpendicular by base. So you have to calculate AB. From the graph, you can take the value of B and divide it by this one time. So this acceleration is equal to theta is equal to AB by OB, AB by OB. In graph number 3, this angle is theta. This is parallel line drawn to the time axis. So this will be BC by AC. BC by AC will give the acceleration of the moving body. Okay. Now how to calculate the acceleration in this case, in this graph? It is not the straight line, it is the curve. So in this case, instantaneous acceleration can be calculated. We can calculate instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration is the acceleration of the body at particular instant of time. So here it is the time and this side it is the velocity. So if you want to calculate acceleration at t1 or acceleration at t2, then what you have to do? You have to go on the graph at the time t1 and you have to draw a tangent with that line, this point, and you have to calculate this theta 1. So tangent, the instantaneous acceleration is equal to slope of tangent at that point of time. Slope, you have to calculate slope of the tangent. As we know, only one tangent can be drawn from any point. किसी भी कर्व पाथ पे अगर tangent ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट से केवल एक ही होगा। तो ये जो है थीटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये दिस लाइन यहाँ पे अगर दे दें AB और ये दे दें C, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AB. This will give instantaneous acceleration first at t1. Now if you want to calculate at t2, again you have to draw the tangent at t2 and this will be the theta 2. This will be the theta 2. So theta 2 is equal to, you will have, this is P, Q and this R. Let this is the name of the terminal. So theta 2 is equal to PQ divided by RQ. This will give the instantaneous acceleration at time t2. You can see theta 1 is greater than theta 2. Therefore, first acceleration, this is acceleration 1 and 2.
So acceleration 1 is greater than acceleration 2. So we can say that it is a non-uniform and decreasing acceleration. This graph represents the non-uniformly accelerated and it is decreasing acceleration. Acceleration is decreasing. Now come to the next graph. Next graph is this one. Here we can take like this graph. Now the curve path is changed. So for this also we can calculate, this is T1, this is T2, T1 and T2. We can draw the tangent here. We can draw the tangent here. So this is theta1 and this is theta2, and this point is P1, this is P2, this is Q1, this is Q2 point. Here it is, you can write here Q1 and Q2, and this one is Q. So from this graph we have taken time P1 and P2. At P1 the point is P1, at time T2 the point is T2, and from P1 and P2 you have to draw the graph, and after draw the tangent, and tangent will make some angle with the time axis. Here it is again making theta1. Theta1 will be equal to P1 Q2, P1 Q2, and here Q1 Q2. So theta1 acceleration 1 will be equal to, here you will get P1 Q2 divided by Q1 Q2, and this will be at time T1. Similarly theta2 you can calculate, this will be changed. ये हो जाएगा आपको P2Q divided by Q2Q at time T2, and here it is very much clear that theta2 is greater than theta1, and therefore acceleration A2 will be greater, or A1 will be lesser than A2. So if the graph in previous graph it was the curve like this, and here it is curve like this. So this graph shows that the motion is non-uniform but acceleration is increasing. It is increasing acceleration. That's all about the velocity time graph. We can draw 3 types of conclusion. All have discussed for your convenience and your knowledge.